See the money won't stay for your meal, getting all the decent pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Next topic is the consideration. It is also one of the essentials of a valid contract. Without consideration, you cannot have a contract. When at the desire of the promiser, a promisee or any other person who has done or abstained from doing something, or does abstain from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. So जब आप किसी दूसरे के ऑफर पे कुछ एक्सेप्ट करते हो at the desire of the promiser कि आप कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, या आपने कुछ किया या कुछ नहीं किया. Now, simple meaning of consideration is something of legal value given in exchange for a promise. आपने प्रॉमिस किया और दूसरे बंदे ने भी प्रॉमिस किया, तो जो लीगल वैल्यू एक्सचेंज हुई है, that is a consideration. For example, something in return, which means if you are selling a house for 10 lakhs, for one person, house is a consideration, for the other person, 10 lakhs is the consideration. Consideration is the necessary element for the existence of a contract. अगर कोई consideration नहीं है, तो that means वो contract नहीं है. ये इस पे थोड़ी सी exception है, वो भी हम कुछ slides बाद बात करेंगे. But generally, if there is no consideration, there is no contract. Common types of considerations are double payments, for example, financial transactions, property, goods, and maybe performance, for example, providing legal services or educational services or other services. These common types हैं, but there can be any sort of consideration. These are a few examples. A promise B to guarantee payment of price of goods which B sells on credit to C. Here, selling of goods by B to C on credit is a consideration for a promise. It's promise. Simple मतलब कि अगर आप किसी को कोई goods सेल कर रहे हैं और वो आपको क्रेडिट कह रहा है कि मैं 5 दिन 10 दिन तक आपको पैसे दे दूंगा, तो इसने आपको गुड्स का प्रॉमिस किया और इसने जो है वो पैसे देने का प्रॉमिस किया. So both promises to do something are known as consideration. Then again, A asks B not to sue C for the year for his debt and promise in case of default of C, A would be liable. Guarantee दे देता है. Here B not filing a suit for a year is abstinence, which is a sufficient consideration for A. Simple मतलब ये है बंदे ने किसी दूसरे से कोई समझने के 1000 रुपीस जो है वो उधार दे लिया, टाइमली पे नहीं किया. ना इस बंदे का राइट बनता है कि ये सू कर दे इसको, लेकिन एक थर्ड पार्टी आती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर आप इसको सू नहीं करते तो मैं गारंटी देता हूं कि ये पैसे वापस करेगा और नहीं करेगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल. और बहुत दफा ऐसे होता है कि आप जो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सकते, आप इसको फॉर एग्जांपल ये प्रॉमिस कर दो कि ठीक है इसने 1000 रुपीस वापस नहीं किया, अगर 10 दिन तक नहीं वापस करेगा आप इसको सू ना करें, मैं आपको वापस कर दूं. देन A promised to deliver iPhone to B and B promises to pay 85,000 rupees on delivery. Here the consideration for A will be 85,000 rupees on delivery, and consideration for B will be the delivery of goods, which is the iPhone. Then we have the essentials of a valid consideration and a lawful consideration. We'll talk about these one by one. For example, desire of the promiser. ये अब सिंपल सी चीज समझने वाली है कि अगर आप खुद से ही
कोई चीज एग्री कर लेते हो वॉलंटरी बेसिस पे, कंसिडरेशन लीगल कंसिडरेशन नहीं होती, आप दूसरे बंदे को सूट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, नॉट एनी अदर पार्टी और वॉलंटरली, फॉर एग्जाम्पल ए सेव्ड बी's हाउस, कैन ए आस्क फॉर कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज. ये एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि कोई नेबर था, उसके घर में आग लग गई, ये उसका नेबर होते हुए फौरन बचाने चला गया और खुद से वॉलंटरली उसने उस पे मे बी इट टुक हिम 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स घर को उसने वो बर्निंग से बचाया और उसके लोगों को निकाला है सब कुछ. जैसे ही वो फ्री हुआ, तो अगर ये नेबर जो है ये इसको कहे कि मुझे इस तरह करो कि 20,000 रुपीज दो बिकॉज आई स्पेंड 4 आवर्स, और अगर वो पे नहीं करता तो नेबर कहे कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और तुम मुझे पैसे पे नहीं कर रहे. So, ऐसी सूरत में ये कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी बिकॉज उसने वॉलंटरी बेसिस पे जाके कंसिडरेशन किया है. हाँ, अगर घर को आग लगी हो और आपको कोई बाहर आए हैं तो आपको कोई बुला रहा हो कि हाँ ठीक है मेरा घर आके सेव कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे पे करूंगा, और फिर आप उसके घर को सेव करते हो, तो देन इट इज फाइन. Promisee or any other person, for example, an act of forming a consideration may be done by the promisee himself or by any other person. ये है कि consideration actually move कहाँ हो रही है. For example, contract करता हूँ मैं and with some other person, लेकिन consideration move हो रही है to C. इसकी तरफ से कंसिडरेशन इसको मूव हो रही है, लेकिन इसकी तरफ से कंसिडरेशन इधर मूव हो रही है. दिस इज पॉसिबल, दिस इज फाइन, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं. एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा. ए गिफ्ट्स अ हाउस टू बी ऑन अ कंडीशन दैट बी विल पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू एज ब्रदर सी. ऐसे कर जाते हैं कि उसका अगर बच्चा छोटा है तो वो कहता है ठीक है मैं अपना घर या इतने पैसे तुम्हारे नाम लगवा के जा रहा हूँ और मेरी डेथ के बाद तुम मेरे बच्चे को एजुकेशन दिलवाओगे. सो इस फादर को तो कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही, कंसिडरेशन तो जो है वो इस बच्चे को जा रही है. तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज फाइन, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये हो सकता है. देन इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल, जो एक बंदा को टीचिंग करता है पास्ट में, but promise was made to pay for services in February. आपने टीचिंग स्टार्ट कर दी और शायद प्रॉमिस बाद में हुआ तो आपको जनवरी की पेमेंट भी मिल गई फरवरी में. तो आपकी कंसिडरेशन वाज पास्ट, आपने पहले कंसिडरेशन कर दी और बाद में जो है वो उसका प्रॉमिस हुआ या बाद में आपको उसकी पेमेंट मिली. ये तो हो जाएगी हमारी पास्ट वाली. कई दफा ज्यादातर हम इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन पे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप रिटेल स्टोर पे गए, you bought something, they gave you the good, you gave them the money, immediate transaction, no delay, within seconds, within minutes. So ये present हो गई. कई दफा आप किसी से promise कर लेते हो कि for example I will send you some goods after 10 days and then you can send me the money after 20 days. So both cases are of future consideration. आज कोई consideration नहीं हो रही, but आप ये भी फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहा है, ये भी फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहा है. नाउ कंसिडरेशन may or may not be adequate. ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला. It is not necessary that consideration is equal to the value of promise. Like a house, if it is priced 40 lakhs or 4 lakhs, it can be sold for 50,000. ये इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है आप कर सकते हो. Because why? Consideration may or may not be adequate. Now, the question or the catch here is कि आप at least free and genuine consent के साथ
वो चीज सेल कर रहे हो। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी चीज है, वो अगर 40,000 की है या 4 लाख की है, आप उसको 20,000 में सेल कर रहे हो विद फ्री कंसेंट, इट इज फाइन। कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी एडिक्वेट, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि एडिक्वेट आपके लिए एडिक्वेट होगी तो किसी दूसरे के लिए एडिक्वेट नहीं होगी। तो इस वजह से यू कैन से दैट कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी एडिक्वेट, इसमें ऐसा इशू नहीं है। It should be real and competent consideration. The consideration is said to be real and competent unless it is physically impossible to be performed. First thing is illegal, uncertain consideration and unreal consideration. So ये जो चार इसकी categories हैं, ये ना हो तो फिर consideration can be fine. For example, not physically impossible to be performed. For example, आप कहते हो A promised to put life in B's dead brother. Now, putting life in a dead body is impossible to be performed. So this cannot be a consideration. Illegal. A promised to give B 500 or 5,000 rupees if B beats C. Again, it is not allowed in law, so it is illegal. Not uncertain consideration. A hire B to perform some work for reasonable amount of salary. Now, what is the reasonable amount of salary? That's not clear. What is some work? It is not clear. So you need to have certain amount of salary and certain amount of work, defined salary. And then not unreal consideration is the promise to pay someone for his already defined duties. जो आप रिश्वत वगैरह ले रहे होते हैं, bribe ले रहे होते हैं, that bribe comes in unreal consideration. यहाँ इसका मतलब एक्चुअली ये है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें इतनी ब्राइब दे रहा हूँ और तुम मेरा ये काम करोगे, और अगर वो ब्राइब लेके काम नहीं करता तो आप उसको सू कर देंगे। आप नहीं सू कर सकते बिकॉज इट इज एन अनरियल कंसिडरेशन। तो ब्राइब के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, अग्रीमेंट्स में भी हो जाएं बट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते बिकॉज इट इज एन अनरियल कंसिडरेशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अब तक हम ये कहते आए हैं कि कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो जब हम प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट करते हैं, व्हाट अबाउट दैट? उसमें बच्चे की तरफ से तो कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही होती, आपकी तरफ से उसको प्रॉपर्टी जा रही होती है। उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। बट अगर कोई ऐसा मसला होगा जिसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन कंसिडरेशन होगी, तो देयर आर सम कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड का सिंपल मतलब मैं इधर आपको समझा दूं कि देयर इज अ रजिस्ट्री ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें ये रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये इसी पे ही होना चाहिए, अदरवाइज इसमें कोई डील ना हो। एंड देन द पार्टीज मस्ट आल्सो शो द रिलेशनशिप, कि क्या ऐसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जब अपने किसी नेफ्यू नीस को प्रॉपर्टी देते हैं तो उसमें कई दफा ये क्लॉज लिखा होता है, दिस पर्सन टुक केयर ऑफ मी थ्रू आउट माई लाइफ, आई वांट टू गिव पार्ट ऑफ माई प्रॉपर्टी टू माई नेफ्यू और माई नीस और टू सम स्ट्रेंजर बाय यूजिंग नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसमें कंसिडरेशन आपकी और कुछ नहीं होती, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होती है, बट मेक श्योर that these kind of contracts have fulfilled these conditions. Otherwise, they are not valid contracts. Unlawful consideration नहीं होनी चाहिए और object भी unlawful नहीं होना चाहिए। For example, if it is forbidden by law,
when any act is punishable by law, for example, A promised B to deliver the goods which were stolen from C. तो ये forbidden है steal करना, which is why it is not allowed. You cannot have a contract of this type. Sometimes it defeats the provision of law. Now this is little technical to understand. For example, बैंक से या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से लोन लेते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए. आपकी हाउस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, you submit those documents as a guarantee to the house building finance people. Terms and conditions are कि अगर आपने लोन पे ना किया तो certain warnings के बाद हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आपके घर को ऑक्शन कर सकता है, और ऑक्शन में जितना पैसा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का रहता होगा वो अपना पूरा करेगा, रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देगा. अब ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. नाउ लेट्स सपोज एक बंदा जो है वो पे नहीं करता हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को, एंड लेट्स सपोज दिस पर्सन इज एन ए पर्सन. हाउस बिल्डिंग फाइनेंस उससे उसका घर ऑक्शन करने लगता है, और ए जो है वो बी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम ऑक्शन का पार्ट बन जाओ, और तुम यहां से अगर तुम्हें घर मिल जाता है तो तुम घर फिर मेरे नाम लगवाओगे वापस. देखें, लीगली इट इज अलाउड, कोई ऐसा इशू नहीं है. अगर बी को ऑक्शन में घर मिल जाता है, ये मालिक हो जाता है, ये इसको सेल कर देता है, इट इज फाइन, कोई ऐसा इशू नहीं है. बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना कि कल को अगर बी को हाउस मिला है तो ये इसको नहीं देता तो सू करेगा, दैट इज नॉट अलाउड. रीजन, बिकॉज आपने पे नहीं किया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि आपसे आपका घर चला जाए. लेकिन आपने ऐसा काम कर लिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वहां से अगर ऑक्शन में घर मिल जाता है तो वो मुझे सेल कर देना. आपने जो लॉ बना हुआ है उसको डिफीट कर दिया है. तो जो मकसद था लॉ का वो शायद खत्म हो गया. Which is why these kind of contracts should not be allowed, and this kind of consideration should not be allowed. Then unlawful consideration में fraudulent nature की जो है कि आप किसी से फ्रॉड करोगे, ये प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें 10,000 रुपीज देता हूँ, तुम किसी के साथ फ्रॉड करो. तो fraudulent nature जो है वो भी unlawful है. Injury to person or property, आप किसी को कहो मैं 10,000 रुपीज देता हूँ, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज करो, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. समटाइम्स कोर्ट रिगार्ड एज immoral. For example, a married woman is paid money to divorce and marry the lender. That is also not allowed. And court considers against the public policy, which means the agreement to pay a person to give false evidence. That is also not allowed. This is all about our consideration.